Okay. हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग, ये सब तो हो गया था। आई थिंक हम लोग चैनल्स पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? सर प्राइसिंग पे पढ़े थे। प्राइसिंग पे लास्ट था क्या? ये पढ़ राइट। लिए, ये पढ़ लिए थे हम लोग, राइट? Yes, sir. That was the last, and then we said about product form pricing, image pricing, ये किए थे हम लोग। ठीक है, टाइम प्राइसिंग हम लोग बोल रहे थे ना कि लोकेशन प्राइसिंग है, मूवी हॉल के फ्रंट वाले सीट का प्राइस कम होता है, पीछे वाले सीट का साइज ज्यादा होता है। डिड डू यू रिमेम्बर प्राइसिंग Yes, sir. स्ट्रेटेजी में? या सो इतना तक हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, फिर सीजनल टाइम प्राइसिंग में हम लोग बोले थे सीजनल प्राइसिंग होता है। ठीक है, कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग में स्टूडेंट डिस्काउंट, सीनियर सिटीजन डिस्काउंट, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर का डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइसिंग कर रहे हैं। ठीक है, चैनल प्राइसिंग, सेम प्रोडक्ट आप डिफरेंट चैनल्स पे जाओ, आप एक पेप्सी पियो रास्ते के कोई दुकान पे, देन यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड ड्रिंक इट, एंड देन यू गो टू अ मूवी हॉल एंड ड्रिंक इट, they have different pricing, so there are different price discriminations. Now we'll start on place. Place is basically the last one, last P basically, or channel of distribution, usko hum log place bolte hain. And to start with, we first understand ki why do we need a channel. Okay, so basically we need a channel to reach our product to the customer. Okay, from the manufacturer's end or from the producer's end, till we reach the customer, we need a channel, a path, right? And that path has many players. That path has many players, independent organizations participating in the process of making a product or service available for use of consumption. Okay. Now, very, very importantly, remember, you both of you work for, marketing, manufacturing organizations and or service organizations, both of them, whether they produce or they manufacture. Service production hota hai, manufacturing. Aaj movies, suppose movie is a kind of a service, it's not a good, right? Okay, so entertainment service. Now wo movie banta hai and then it gets distributed across the world, right? सारा वर्ल्ड में पहुंचाया जाता है। नाउ पहुंचाने के लिए हमें इंटरमीडिएरीज चाहिए होते हैं, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उसके भी, ठीक है, उसके भी चैनल पार्टनर्स होते हैं। थिंक अबाउट अ गुड्स लाइक हम साबुन खरीदते हैं, सोप खरीदते हैं, करेक्ट? हम वी एज अ कंज्यूमर नीड सोप एंड यूनिलीवर एज अ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग सोप। फ्रॉम यूनिलीवर एज अ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू मी, मेरे घर तक पहुंचने के लिए एक पाथ होता है। तो Unilever ने प्रोड्यूस किया, फिनिश्ड गुड्स बनाया, that goes into their warehouse, from their warehouse it goes to their C&F, clearing and forwarding agent, from clearing and forwarding agent it goes to the super stockist or distributor, from the distributor it goes to the retailer, and retailer to me or you, correct? This whole thing is a path or a channel, and the intermediaries are the distributors, the retailers, the agents, the brokers. ठीक है, there are plenty of facilitators, intermediaries, merchants, agents, brokers, wholesalers, ठीक है, distributors, super stockists, these are all intermediaries. ये रहते हैं, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है। ठीक है, similarly for services, as doctors want to give a service, and what is that intermediary? The hospital or the clinic is that intermediary. डॉक्टर रास्ते पे बैठ के तो सर्विस देगा नहीं, he has to give his service in some hospital, some clinic, so that's the intermediary. ठीक है, for a car manufacturer, of course the car dealers are inverted, and the car manufacturer also has to give a service, so the service garages are the intermediaries. ठीक है, so this is the channel reaching the product, whether it's a service or a good, from the manufacturer or the producer to the consumer. बीच में जितने भी लोग आते, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, interdependent organizations. So distributor, retailer is interdependent, the company to distributor is interdependent, all of them are interdependent, correct? Make sense? Okay, any questions? Sir, in this, how we decide that how long the channels we need to deliver our products? Suppose just we are manufacturing some products, then warehouse, CDCs, branches, then distributor, retailer. So how we decide this, that what is our product channel to deliver our Okay, product to good. customer?
Good question. So basically when we हमें पहला तो देखना है कि भैया मेरा कंज्यूमर है कहाँ पर. ठीक है, मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, सपोज पंजाब में मेरा एक जगह है, सपोज मैं पंजाब में लुधियाना में मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ. साइकिल्स का मैन्युफैक्चर्ड इन लुधियाना. And my customers, my consumers, my customers are there across the country in different markets, even in the rural markets. मुझे वहां तक पहुंचाना है, right? How do I go? I can't take a truck, load my cycles and go around selling, giving it to everybody. मुझे वहां पर कहीं ना कहीं लोकल जगह पे एक बंदा चाहिए जो मेरा कंज्यूमर के पास पहुंचा देगा. So my ultimate final intermediary should be the closest to the consumer. हम वहां से शुरू करेंगे कि मेरे जो किराना दुकान है, इट शुड बी द क्लोजेस्ट टू द, आई शुड बी रीचिंग क्लोजेस्ट टू द कंज्यूमर, एज क्लोज एज पॉसिबल टू माय कंज्यूमर. वहां से शुरू करेंगे. तो मेरे, इफ आई वांट टू बाय अ सोप, द क्लोजेस्ट वन शुड बी द किराना स्टोर क्लोज टू माय हाउस. And then to reach to that kirana store, how do I reach? I can't send my vehicle from the factory to in Punjab to Mumbai, कि मुंबई के एक छोटे से जगह पे जाके किराना दुकान पे साबुन देके आऊं, नहीं होगा. Then I have to appoint some intermediary there who can help me distribute that to all the kirana stores. So that becomes a distributor. And he should also be a distributor who can be accessible. ऐसा नहीं कि आपने सारा मुंबई शहर में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया और वो बंदा पूरा 50 किलोमीटर का रेडियस घूम के माल दे रहा है. ऐसा भी नहीं होता है. So every place in Mumbai city or every place in Delhi city or every place in Lucknow or Varanasi, they will all have small distributors. Distributors are the people who take your product to the retailers. Okay, so that becomes a channel. Now from the factory warehouse, you have a central warehousing place, which is usually called a depot or a C&F or a C&S, depending on the distance to your further intermediaries. तो अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरे further intermediaries are there in every corner of the country, I possibly need 4 C&F locations. जहां पर फैक्ट्री से मेरे माल वो C&F पे आएंगे, and from there those C&Fs can distribute the stock to the radius of possibly 500, 700, 800 kilometers. So मेरा एक अगर C&F बनेगा नागपुर में या एक मुंबई में बना एक C&F एजेंट, वो C&F एजेंट can supply to across Maharashtra, across Gujarat, across Goa. This is, or even up to MP and Chhattisgarh. Similarly, I need to have one C&F agent at Bangalore, possibly, or South somewhere, possibly, who can cater to all the 4 states in South. Similarly, I need to have one good place in North where who can cater to Delhi and UP and Haryana and Punjab and Himachal and all the states in the North. So depending on the accessibility of my, customer, मेरे को कस्टमर को कहां तक पहुंचाना है, I will decide on the length of the distribution. ठीक है, number 1. Number 2 is, as I go to the next slide, my channel configuration have changed. एक जमाना था जब मुझे C&F जरूरी होता था, डिपो जरूरी होता था, वहां से मुझे डिस्ट्रीब्यूटर जरूरी होता था, वहां से मुझे रिटेलर किराना स्टोर जरूरी होता था. Today there are so many new models of channel. Every company is having their own web portal from where you can actually directly buy. You don't have to have a depot or a retailer. आप वहीं पर order दो, company direct आपके पास भेजेगी through courier service. ठीक है, तो e-commerce आने के बाद the whole world has changed. Digital media आने के बाद the whole world has changed. It has become a lot of disintermediation. बोलते हैं कि बीच वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, रिटेलर्स है, वो सब निकल रहे हैं धीरे धीरे. जरूरत ही नहीं है. Why should I? मेरे पास एक अगर अच्छा कुरियर सर्विस होगा, मैं किसी भी दुनिया की किसी भी कोने से किसी भी कोने तक पहुंचा सकता हूँ 24 घंटे में माल. करें. सो अभी जो number of intermediaries in between the manufacturer, producer to the consumer is reducing actually. So there are multi-channels now, using 2 or more marketing channels to reach customer segments in one market. So sometimes we see a company has an e-commerce portal of their own. Apple has an e-commerce portal of their own, as well as they will have a showroom, a physical store also. That's a multi-channel. Then they will also go and
sell it through Amazon and Flipkart. They will also go and sell it through local distributors and retailers. That's a multi-channel approach. Correct. Then there's omni-channel. I have got a physical channel, physical store of mine, as well as an e-commerce store for mine. मेरा web portal भी है जहां से मैं बेचता हूं. That's omni-channel. Integrated marketing channel system. I sell through all the kinds of channel. I sell through e-commerce. I sell through modern trade. I mean supermarkets. I also sell through normal small chota retailers. I also sell through wholesalers. Integrated. All are integrated together with the company. Okay. So could I answer your question, Meg? That what should be the length of the distribution channel? Sir, I just wanted to add one more thing, sir. There is something called last mile channel also. Like Yeah, so that's the last mile channel. That's the last mile channel. Aapka kirana store is the last mile channel. Aapka retailer of a product is your last mile channel. वहाँ last mile channel is consumer को पहुंचने से पहले, consumer के हाथ लगने से पहले वो कहाँ से खरीदता है. So the last mile channel can be an Amazon in the web world. Okay, even can be the company's web portal. जहां से straight last जहां से एक customer माल खरीदता है. It can be a kirana जहां से आप और मैं जाके साबुन खरीदता हूं. And it can be Amazon जहां से आप और मैं एक मोबाइल फोन खरीदते हैं. ठीक है. So last mile is basically last कितना कौन कहां से last खरीद रहा है. ठीक है. So basically it can be any channel from where आज के दिन में it can be any channel from where a customer buys it. Last customer consumer कहां से खरीदता है. That's the last mile. Because consumer is the last, right? In the whole value chain, consumer is the last. उसके पहले जो भी इंटरमीडियरी है, रिटेलर अगर किराना स्टोर है, नॉर्मल रिटेलर है, आज ई कॉमर्स पोर्टल्स है, आज कंपनी के अपने पोर्टल्स हैं. ठीक है. That's the last mile channel. Even आज के दिन में there is something called Q-commerce, the Dunzos and the Zeptos and even the Swiggies, they reach you products in 10 minutes to your home. They are the last mile channel. क्योंकि आप डायरेक्ट उनको ऑर्डर देते हो, वो आपके घर पे आके पहुंचा देते हैं. Correct. Got it. Meg, any questions? Clear, sir. Okay. Yeah. Sure. Okay. Digital channel, we all know digital channel now. There are plenty of digital channels, including your mobile phones. Okay. And even, in fact, mobile marketing is becoming more, stronger than normal e-commerce channels. ठीक है. आज मैं और आप बहुत रेयर ही लैपटॉप या कंप्यूटर खोल के ऑर्डर देते हैं. हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपना मोबाइल खोल के ही अमेजोन में ऑर्डर दे देते हैं, कहीं भी ऑर्डर दे देते हैं, बिकॉज एप्लीकेशंस आर देयर इन द मोबाइल इटसेल्फ. ठीक है. सो द डिजिटल चैनल हैज अ ह्यूज रिवॉल्यूशन. कस्टमर सपोर्ट इन स्टोर, ऑनलाइन एंड फोन. आप डिजिटली प्रोडक्ट खरीदो, उसका कस्टमर सपोर्ट आपको फिजिकल स्टोर में भी मिलता है, ऑनलाइन में भी मिलता है, इवन फोन में मिलता है. ठीक है. Sometimes the most important thing that has happened is check online for the product availability at local store. आप जैसे ही एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए whenever you go to a normal retail store close to your house, you go and check the price there, and then immediately you open the application in your mobile and check the price in Amazon. You check it in online. What is the price online? Correct. This is a big change in habits. Order product online and pick it up at store. Every e-commerce portal, Flipkart, DMart, Amazon, everybody is now saying you order it online and go and pick it up at a store wherever you want to. Okay. Return a product purchased online to a nearby store. So physical and digital mix ho raha hai. There's an integration. You're buying a product online, and if you want to return it, you can go and return it in a store. You're buying a product online. I will tell you a recent example. I bought some jeans online, and they say that if you have to alter the jeans, go to the local Shopper Stop store, show the invoice, and they will alter it for you. Okay. So it has become so much integrated. Physical and digital has become so much integrated that you don't face any problem now. आप सोचते हो मैंने एक शर्ट खरीदा, if it doesn't fit, मैंने एक ट्राउजर खरीदा, एक जींस खरीदा, it doesn't fit, what happens? एक तो है, you can return it. Second thing is they are now making it much easier. If you want to alter it, go and alter it in the local Shopper Stop store or whatever store. They will tell you. So life has become much easier. जैसे कि आप normal
एक apparel store में जाके एक trouser try करते हो, and then once you like it, you go and tell the counter guy, boss, I need an alteration. थोड़ा length कम करना है, थोड़ा, they do it for you. Even online, they are doing it for you. Okay, there's so much of channel integration now. Okay, role of a marketing channel. So what does a marketing channel do? The channel function and flows. Okay. First of all, gather information about potential current customer, competitors, and other actors and forces in the market environment. Very, very important that there are plenty of actors in the market. There are customers, there are competitors, there are technology partners, there are financial partners, a lot of things are there. Even government is an actor in the store. Okay, in the market, correct? So these are the actors in the market. These are the forces in the market. The competitors, the customers, the financial organizations, the government, the legal forces, there are tax forces, and so on and so forth. So these channel partners, these channel members, these intermediaries, they are the eyes and ears of the organization for the company in the market. They pass all the information from the market to the company. That's a major responsibility. ठीक है, सो आज अगर मार्केट में नया कोई कंपटीटर आ गया, नया कोई बैंकिंग सिस्टम आ गया, नया कोई एनीथिंग दैट कम्स इन द मार्केट, नया कोई कस्टमर बेस बढ़ रहा है या व्हाटएवर, एनी इंफॉर्मेशन हैपेंस कम्स, who is going to pass it? The distributor is going to pass it. The intermediary is going to pass it to the organization. Develop and disseminate persuasive communication to stimulate purchasing. Okay. Now, while company is doing its marketing, promotions, okay, communication strategies, advertisement, POS materials, posters, danglers, वगैरह company बना रही है, ठीक है. These distributors and intermediaries also take part in doing that. ठीक है. They also communicate with the customer through different channels, and they share the marketing responsibility with the organization to communicate with the customers to stimulate purchase. That's also part of their job, their duty. Okay. Suppose it's a car dealer, usually bigger dealers like car dealers, automobile dealers, they do it. They put advertisements on the local newspaper on their own. Company doesn't do it for them. Okay. Big electronic distributors, they do their advertisement on the newspapers and local TV channels, okay, on their own. Okay, so they are a part of, they share the responsibility of marketing with the organization. Negotiate and reach agreements on price and other terms so that the transfer of ownership of possession can be effective. So what do they also do? They are the people who are in the front line. So they will negotiate with their customers on price. Company will not come and discuss about price, right? Retailer ka price negotiation kaun karta hai? Retailer khud karta hai, right? Okay, price negotiation karta hai, uska finalize karta hai, and then suppose transfer of ownership. When you are selling one product from the organization to your customer, okay, you have transferred the ownership, transferred the risk of the product. And that's also being done through that intermediary. Just let me give you one example. I recently purchased, home automation equipments from Tata Power. Okay. So basically, what happens is all the switches of my house can be operated from my mobile phone. Okay, so this needed some switches, almost 6 to 9 switches, which I had to put across. Now I purchased it from Tata Power. Now Tata Power directed it to a distributor. So वो distributor ने क्या किया? Distributor ने मेरे साथ quotation भेजा. I negotiated with them. They gave me the final price. They gave me the installation cost. Everything बना के उसने एक quotation बना के भेजा. I agreed on it. I gave them some advance. Then they started installing the thing. Installation हो जाने के बाद they gave me the final tax invoice and my warranty registration. ये मेरा पूरा risk जो टाटा पावर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास ओनरशिप आया था, डिस्ट्रीब्यूटर से मुझसे ओनरशिप ट्रांसफर किया. जैसे मैंने पैसा देके फुल कंप्लीट कर लिया, they also gave me transferred the warranty and guarantee of the product, the risk of the product, or the ownership of the product. Correct? Got it. Place orders with manufacturers. If you need to service the market, you need to have inventory. So who, on behalf of the customers, on behalf of the retailers, who is going to keep inventory? The distributor is going to keep inventory. And to have that inventory, they need to place orders with the manufacturer. So ultimately, to service the customers in the market,
Distributors, intermediaries, agents, brokers, they place orders with the manufacturers. Correct. Acquire the funds to finance inventories at different levels in the market channel. To get that stock from the company, they have to finance the company, they have to pay the company. Correct. And if they have to pay the company, you remember we said that there is a money flow happens from backwards. हम लोग पढ़े थे ना कहीं पर कहाँ था वो इसी में आगे है सर शायद एक सेकंड हाँ राइट ओके हम लोग आते हैं उसको ओके सो उसको फिनांस भी करना है ठीक है he has to go and finance it to the company so that it gets stocks and stocks to service the market. Assume risk connected with carrying out channel work. ठीक है आज he is the channel partner, he is the distributor, he is the wholesaler or he is the retailer. So if he has to do it work, there's some risk attached and he is to accept that risk. He has to assume that risk. So company is not going to take that risk for him when he's working in the market. Yes, company is going to support him. ऐसा कुछ हो गया प्रोडक्ट को लेके then company is going to support. But finally the risk of आज मार्केट में क्रेडिट दिया उसका पैसा नहीं आया वगैरह, those risks are his own risks. This is what he does. ठीक है. Provide for the successive storage and movement of the physical product. So he also stores the product and also moves the product further towards the customer. Correct. So distribution जो करता है वो उसका vehicles होता है, sales people होता है, delivery people होता है, who moves the product further to the customer. Correct. Provides for buyers payment of their bills through banks and other financial institutions. Think about a B2B organization. You are an intermediary, you are a distributor of a industrial product. You are selling it to a, something like what I did with Tata Power. When I inquired with Tata Power about these switches, these home automation switches, what did they do? They directed it to a distributor. Distributor provided me the switches and the installation. They took money from me and they transferred that money back to company. So the banking and transactions on those bills happen through that distributor. Correct. Oversees actual transfer of ownership from one organization or person to another. So that's what I said. When you are selling a product from the manufacturer to the distributor, the ownership gets transferred. As soon as you pay for that money, your ownership gets transferred. From the distributor to the retailer, as soon as the retailer buys the product and pays money, the ownership gets transferred. From the retailer to the consumer, as soon as the consumer buys the product, pays the money, the ownership gets transferred to the final consumer. And this whole transfer of ownership from organization to the person is done through an intermediary. Correct. Any questions here? Anything that you don't understand, don't feel comfortable? No? Chalo. So yes. So this is a example of different flows of marketing flows. An example for a forklift truck, basically. So the physical flow of the physical product, एक साबुन भी होगा तो that's a physical product. It goes from a supplier to a transporter to a manufacturer. From manufacturer, it can go directly to the customer. जैसे आज के दिन में हो गया कंपनीज पोर्टल वेब पोर्टल्स कभी कभी इवन डायरेक्ट कंपनी कुछ कंपनी है जो डायरेक्ट कस्टमर्स को देते B2B कंपनीज जो डायरेक्ट कंपनीज को बेस्ड कंपनी टू कंपनी बेचते हैं ठीक है then otherwise it will go through a transporter warehouse to a dealer or a retailer to a transporter to a customer. The physical flow usually happens like this. The transporter warehouse to a customer or manufacturer to the customer is directly there. Okay. Then title flow, the ownership flow, the risk flow of a product happens from supplier to manufacturer, the procurement supplier, the vendors to manufacturer, or manufacturer to the dealer, retailer, distributor, and from there to the customers. Payment flow happens in the opposite direction, from the customer to the banks to the dealers, dealers to the banks, banks to manufacturer, manufacturer to the bank and to the supplier. This is the only flow which goes backwards to the physical flow of those stocks. And then there are information flow. Lot of information keep going, back and forth. So something like suppliers, the vendors of your raw material, your packaging material, or your other supplies to the organization,
From there, the information flow can go to the manufacturer, it can go to the transporter, from transporter to supplier. आज supplier को माल भेजना है manufacturer को, transporter को फोन करके बोला कब गाड़ी भेज रहे हो, warehouse को फोन करके बोला बिलिंग बनाओ, इनवॉइस पिकअप करो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर warehouse वाला सप्लायर को फोन करता है कब गाड़ी भेजूं, आपका माल भेजना है मुझे, एंड दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर एंड सप्लायर्स के बीच. सेम थिंग फॉर बिटवीन ट्रांसपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में. Information between supplier and manufacturer, information between manufacturer and customer, manufacturer and dealer, manufacturer and transporter, transporter and dealer, dealer and customer, dealer and transporter. All of them are on two ways. हर कोई हर एक के साथ कम्युनिकेट करता रहता है, राइट? यू मस्ट हैव ऑल सीन इन योर ओन बिजनेसेस. ठीक है, इट्स नॉट अ वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स ऑलवेज टू वे फ्लो. बॉस आपका इनवॉइस लग गया, पेमेंट करो, आपका माल रेडी है, माल ले लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चलता रहता है, राइट? सुबह से शाम तक एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन फ्लो चलता रहता है बिटवीन कस्टमर, बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डीलर, बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. करेक्ट. एंड फाइनली प्रमोशन फ्लो, आपका कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ प्रमोशंस, आपका पोस्टर्स, टैंगलर्स, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह जो भी बना रहे हो, ठीक है, उसका भी कोई सप्लायर होता है. सप्लायर होता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी होता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी कस्टमर को डायरेक्ट एडवर्टाइज करता है कभी कभी. ओके, फिर वहां से दे समटाइम्स सेंड इट टू द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर फिर बीच में कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी होता है, उसको देता है, ही गोज एंड पुट्स इट इन द रिटेलर एंड मार्केट, या तो ही हिमसेल्फ टेक्स केयर ऑफ द एडवर्टाइजिंग टू द कंज्यूमर, बिलबोर्ड्स लगाता है, फिर रेडियो में जाके एडवर्टाइज करता है, या टीवी में जाके एडवर्टाइज करता है, या न्यूज़पेपर में जाके एडवर्टाइज करता है, या इवन डिजिटल एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया में, गूगल में जाके एडवर्टाइज करता है. ठीक है. सो दीज आर 5 डिफरेंट फ्लोज ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. एनी क्वेश्चंस? या मैच इट विद द योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न. अपने ऑर्गेनाइजेशन में सोचो ऐसा कुछ होता है क्या, यस, समथिंग हैपेंस लाइक दिस. करेक्ट. यस सर, सेम प्रोसेस भी है. सेम प्रोसेस होता है एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑन दिस अर्थ. ठीक है सौरभ, आपका भी सेम होता है. आपको तो और भी ज्यादा दिखेगा क्योंकि आप मार्केट में हो, है ना? एंड यू आर मोर इनटू, सौरभ, नाउ योर टास्क इज मोर इनटू प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. तो यहाँ पर तो हर एक जगह आपको नजर आना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता है. करेक्ट. एंड नाउ फॉर इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल, व्हेन यू टॉक अबाउट चैनल, अभी आप बता रहे थे ना सर लेंथ कितना बड़ा होगा वो चैनल का. ठीक है. नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट लेंथ. सो समटाइम्स sort of consumer marketing channel, industrial marketing channel, the consumer marketing channel, there are 4 different ways to do it: 0 level, 1 level, 2 level, and 3 level. 0 level, the length is the shortest, manufacturer to the consumer. 1 level, manufacturer to retailer to consumers. जैसे कि मैं I am Nestle or I am Levers or I am P&G, I straight away sell to Amazon and Amazon goes and sells it to consumers. Correct. Or 2 level, manufacturer to wholesaler to retailer to consumer. होलसेल मार्केट है, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं स्ट्रेट अवे जाके होलसेल में देता हूं, होलसेलर से रिटेलर आके खरीद के ले जाता है और रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है. सर आई मोस्टली वर्क विद द एजेंसी. सो एजेंसी में तो ये था सर, जस्ट बिकॉज़ यू नो फॉर एग्जांपल आई वर्क विद द हिंदुस्तान यूनिलीवर आल्सो. करेक्ट. तो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह तो थे ही, बट क्या होता है सर, किसी किसी गांव में द पॉपुलेशन इज समथिंग अराउंड 20 हाउस का पॉपुलेशन, 100 लोगों का पॉपुलेशन वाला टाउन, तो वहां तक रीच नहीं हो पाती थी. तो वहां तक क्या होता था? रीच नहीं हो पाती थी. रीच नहीं हो पाती थी. करेक्ट. ओके. बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर भी तो सर वो सिटी में बैठा हुआ है. करेक्ट. राइट. फिर वो वहां पर भी सर गांव की पॉपुलेशन वगैरह वहां पर भी बोर्ड्स लगाने हैं. करेक्ट. हमने एलएमसी एक डिवीजन स्टार्ट किया था लास्ट माइल. हाँ बताओ. एजेंसी, फिर वो बीच में एजेंसी आकर के फिर वो सप्लाईज वगैरह वहां पर दे देते हैं. करेक्ट. यस. क्योंकि रीच सर मैक्सिमम रीच तहसील लेवल तक हो जाती थी, बट टाउन लेवल तक रीच नहीं हो पाती थी. You know, that's the reason rural market servicing is a speciality. ठीक है. इतने छोटे छोटे गांव, अभी तो ठीक है, लीवर्स, नेस्ले, ये लोग बहुत उस पे नजर दे रहे हैं. However, wholesalers play a big role here, big role here. ये जो मेन सिटीज के होलसेलर होते हैं ना, ये रूरल मार्केट से सारे गांव से, मैं I'll tell you, I have been to
interiors and interiors of rural market of Northeast, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, इसके interiors तक जाके मैं छोटे छोटे गांव, वैसे जैसे बोल रहे हैं 20 घरों का गांव है, एक छोटा सा दुकान है, ठीक है, या 4-5 गांव मिला के एक दुकान है, ठीक है, राइट सर। तो मैं वहां तक जाके देख के आया हूँ। सो ये होलसेलर्स बहुत बड़े काम के लोग होते हैं यहाँ पर। तो मेन सिटी, सपोज मेन टाउन पे एक होलसेलर होता है, बहुत बड़ा सा होलसेलर, वो सारे कंपनी के माल रखता है, और ये जो छोटे छोटे रिटेलर हैं गांव खेड़े से आते हैं यहाँ पर, बस में चढ़ के आते हैं, होलसेलर पे सारा ऑर्डर दिए, उसी बस के ऊपर ने चढ़ाया और ले गया अपने गाँव। सो मोस्टली सर चैलेंजेस आए थे फॉर एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा सर, इधर उत्तराखंड में एंड गुजरात साइड में नर्मदा में। सो हम लोग को सर आधा किलोमीटर सर ऊपर चढ़ाई चढ़ करके वहां पे जा करके हमने ऑर्डर प्लेस करना पड़ता था। अरे आप ये तो छोड़ो, हम मैगी बेचते थे, मैगी इज देयर इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिमालयस, यू नो। राइट सर, राइट। ठीक है, सर आपको और चैलेंजेस होते होंगे। दैट इज द प्रोडक्ट व्हिच इज देयर इन एवरी कॉर्नर ऑफ द हिमालयस। हम लोग चाइना बॉर्डर तक भी जाके मैगी दे के आए। एक छोटा सा दुकान वहां पर चाय बना रहा है और मैगी रखा हुआ है, कुछ पार्ले जी का बिस्किट रखा हुआ है, उसके पास भी जाके मैगी दे के आए। ठीक है, सो हाँ है, these are challenges, these are things we need. That's why India रूरल मार्केट जिसने कर लिया एक बार ना, वो उसने दुनिया देख ली सर। ठीक है, 42,000 का सर रूट प्लान्स मैंने बनाए थे। हाँ, होगा। मोस्टली सर विजिट किया, लगभग 3,000 टाउन्स में भी विजिट कर चुका हूँ। करेक्ट, that's important। मैं अभी ये सबको बोलता हूँ ना, I have been to every corner of the country today। ठीक है, I am one of the very rare pieces जो नागालैंड के एकदम कॉर्नर, जहां पर तो मैंने बर्मा बॉर्डर वगैरह आ जाता है, मैं वहां पर जाके रह के काम कर चुका हूँ। आई हैव बीन टू द कॉर्नर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो दैट एक्सपीरियंस इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये सब वो एक्सपीरियंस के लिए ना पीपल वांट टू हायर यू। मैं जितना भी ऑर्गेनाइजेशंस में गया हूँ, काम किया हूँ, सब बोलते हैं कि सर आपका जो तजुर्बा था, वो तजुर्बा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर रखे हैं आपको। ठीक है, एंड that's important because India, very importantly, India is a very diversified country। हाँ, आप दिल्ली सिटी में जो होगा, आप केरला के कॉर्नर में सेम चीज नहीं होने वाला है। करेक्ट सर। ठीक है, तमिलनाडु के कॉर्नर में या सिक्किम के कॉर्नर में सेम बिहेवियर नहीं होने वाली है। एंड इफ यू नो द बिहेवियर्स, देन यू आर द किंग। ठीक है, यू आर द किंग। सो एक्चुअली एफएमसीजी का ही सब ज्यादा रहता है रीच। बिकॉज जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था खुशियों की डोली केकेडी करके, उसमें भी सर बहुत बड़ा चैलेंजेस था। एंड जीपी नूडल्स ने भी अपना वो सैम्पलिंग एंड ऑल का स्टार्ट किया था। तो ये काफी मतलब ग्राउंड लेवल पे सीखने को काफी। Absolutely, yes. Okay, so coming back to this 2 levels through wholesalers, where you reach your rural markets, wholesalers are important for reaching to consumer, to retailers where the company doesn't have a direct distribution। ठीक है, आज अगर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको सिर्फ होलसेलर के थ्रू से ही पहुंचा सकते हैं, and that's why wholesalers are important। Sometimes even wholesalers are so strong that some organizations nowadays even have started going directly through wholesalers to the whole market, not to distributors. Something like, I'll give you a big example. This company which sells that perfume called Fog. Okay, what is that? Vinny. Vinny. Okay. Now that organization, where that company, when it started making this product called Fog and many other perfumes, they did not make any distributor. They straight away went to a wholesale markets, appointed wholesalers, gave them full stocks, gave them all the discounts of the distributor, and told them to go and promote. And whatever percentage margin distributor wala basta tha, they would either give it into scheme or put it into TV. So what happened was, these wholesalers were encouraged and motivated to sell their product because they were getting higher margins. And the TV created the pull. So both together, it was a very, very successful model. In fact, Vinny was one organization which toppled Unilever's Axe with Fog. Unilever's Axe was the highest selling market share product in the country in perfume segment. Till Vinny came in 2 years' time, 24 months' time, Vinny toppled them. They became the first, and
universe act becomes the second. That's the power of wholesaling. Okay. And then the third level, from manufacturers to wholesalers to jobbers to retailers to consumers. Okay. So something like, think about Walmart, think about Metro, think about Reliance Market. These are also wholesalers. They are called cash and carry markets, cash and carry supermarkets. They are supposed to sell only to retailers. Okay, they are supermarkets for retailers. Okay, now what happens is a manufacturer will give their product in bulk quantity to these wholesalers, to Metro and Walmart. And what Walmart will do is, or Walmart or Metro they will make their own brands there. They will get the products packaged there, labeling there, done there through jobbers. And from there, they will sell it to the retailers. ठीक है, अपना private label बना देते हैं कुछ products के, and then from there, they will sell it to retailers. ठीक है? So these are 4 different levels of, when आप जो बोल रहे थे, length of the distribution channel, Meg, you were asking, these are the length of the. So basic idea is how fast you can reach the customer and how conveniently your consumer can get the product. The idea is that last mile distribution. Okay? That how close am I to the consumer. Okay, so for here, the last mile distribution is manufacturer to the consumer. Here, the last mile is the retailer to consumer. Here it is retailer, here is retailer. We need to check how fast we can reach and how deep, how wide we can reach the consumer. It should not happen that you are staying in, suppose in Delhi city, Delhi city is a huge city. It has Old Delhi, South Delhi, New, West Delhi, East Delhi, Noida, Gurgaon, all together DNCR. You are staying in DNCR ka Gurgaon mein, and there is only one distributor in Noida. It's a very, very difficult task for the distributor to service the market very regularly. Okay. So the consumer will not go up to a huge distance to buy a product. आप suppose एक मारुति का dealership सिर्फ साउथ दिल्ली में है और एक बंदा ईस्ट दिल्ली में बैठा है, उसको गाड़ी खरीदना है, या वो नोएडा में बैठा है, उसको गाड़ी खरीदना है, गुड़गांव में बैठा है, उसको गाड़ी, do you think that guy will be even interested to go to Noida to buy a car from Gurgaon? नहीं. ठीक है. If the dealership is there close to his place where he stays, it's always good, right? So that's the last mile distribution that we are talking about. ठीक है. Industrial marketing channel, market manufacturer to industrial customers straight away. That's again the last mile. First level is again the distributor. बीच में कोई distributor होता है. So something like, आप बहुत देखोगे industrial products. ठीक है. There are equipment sellers. ठीक है. Generator seller, electric producing generator sellers. They go through distributors. ठीक है. एकदम straight away manufacturing distributor को भेज देता है, और distributor particularly in rural areas, tractors. Okay, industrial customer है, एक rural farmer को तो आप consumer नहीं बता सकते, वो industry है ना, farming industry है, उसके पास दो ट्रैक्टर चाहिए, 2 टिलर चाहिए. It's an industrial product. So देखना, वहां पर किसी भी गांव खेड़े में जाओगे, वहां पर 10 माने फुल एरिया मिला के एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो सारा इक्विपमेंट्स बेचता होगा, फर्टिलाइजर्स बेचता होगा. ठीक है. सो वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से जाता है फॉर दैट कस्टमर. ठीक है. सेकेंड लेवल इज मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर्स रिप्रेजेंटेटिव. Representatives are those agents and brokers and even sometimes wholesalers. ठीक है. जो वो प्रोडक्ट लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, या डायरेक्ट कस्टमर से ऑर्डर लेता है और कंपनी को देता है, बीच में बैठ के कमीशन खाता है, कमीशन लेता है. ठीक है. एंड सिमिलरली देयर आर मैन्युफैक्चरर्स टू मैन्युफैक्चरर्स ब्रांच ऑफिसेस, सेल्स ऑफिसेस. ठीक है. एंड फ्रॉम देयर दे आल्सो सेल इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे आल्सो सेल इट टू द इंडस्ट्रियल कस्टमर्स, दे आल्सो सेल इट टू industrial customers directly, or sometimes even sell it to the industrial representatives, industrial product representatives, the agents and the brokers. So suppose a manufacturer is set in Delhi, he might have a sales branch in Chennai, he might have a sales branch in Bangalore, in Mumbai, all the major cities, to service the market, be close to the customer, as close as possible to the customer. Okay, and from there they directly service the customers, B2B customers or industrial market customers. Okay.
Okay, so these are different channels. आज के दिन में channels have become a very, very wide thing. I have done a little research of FMCG channels, and you will be surprised. I found 14 different ways of a distribution to the market. And it is so interesting. You will not, अगर आप मार्केट में नहीं हो तो आप समझोगे भी नहीं कि इतने सारे मार्केटिंग चैनल्स हैं, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं. I will show it to you a little later. That's something which I usually teach in MBA, but I will show you here. Okay. So यहाँ पर कोई questions है? Any questions here? Okay. So channel design decisions. How do we design a channel? Okay. Analyzing customer needs and wants. Desired lot size. Okay. What is lot size? एक retail आपका everything that you design is for your customer. Customer को focus में रख के. ठीक है. Now customer's lot size. आज मैं कोई प्रोडक्ट बल्क में खरीदूंगा या यूनिट में खरीदूंगा. मैं एक साबुन खरीदूंगा तो मैं यूनिट में खरीदूं, 2 पीस, 1 पीस, 3 पीस ऐसा खरीदूंगा. अगर कोई रेस्टोरेंट ऑयल खरीदेगा, विल ही बाय 1 liter ऑयल? नो. We'll always buy 15 liters can or even 100 liter drums. आज industrial manufacturers of biscuits, will he buy 1 kilo atta packet or maida packet? No. He will always buy 25 kilo and 50 kilo and 100 kilos bags. So depending on the lot size, I will design my distributors. If it is a small little unit lot size, 2 piece, 3 piece, and it goes to a retailer, kirana store, then I will have a distributor who is used to that kind of lot size. If I need to have industrial distributors who sells bigger lot sizes, same thing, same Ashirwad आटा 1 kilo के जगह में वो 25 kilo बेच रहा है या 100 kilo बेच रहा है, same basmati rice 1 kilo के जगह में वो 25 kilo बेचता है, then it will go through a different kind of a distributor. My distribution will go through the wholesalers, bulk sellers. Okay, correct. Got the idea of lot size? Okay. Waiting and delivery time. Okay. Maybe my distributor or my retailer who is the last mile. Okay. For a normal customer, who has gone to buy a soap, for him waiting or delivery time is not major. वो कोई किराना दुकान में जाता है, पैसा देता है, एक लेता है, घर आ जाता है. But for a car dealer, a car automobile dealer or a motorbike dealer, two-wheeler dealer, to go and get your product delivered, you need to wait. So that guy needs to have a waiting place for you. Correct. So इसीलिए कार डीलरशिप में जाओगे तो आप देखोगे एक लाउंज बना रहता है, कस्टमर सिटिंग लाउंज है, एक सर्विस सेंटर में कस्टमर सिटिंग लाउंज है. They treat you well there. ठीक है. And in different other places, even tourism industry. When you go, you have a waiting lounge there where people treat you, where people, offer you tea and coffee, tell you to wait karo, and then you go and buy your tickets or whatever you transact there. Correct. Special convenience. आज एक छोटा किराना रिटेलर को doesn't need to have big space. 10 by 10 का एक जगह होगा, वो किराना दुकान स्टार्ट करेगा. But think about an automobile dealer or a truck dealer. For him, space is a big thing. He needs to have space. Correct. He has to have space. For a furniture dealer, he has to have space. Correct. For a dealer who is selling kitchens, आज के दिन में कितने modular kitchens आ गए. Think about a Godrej interior kind of a company. His dealer or his showroom has to have real good space. Not like a small distributor of a consumer product. Correct. Product variety. What kind of a product variety should he have? Should he be an exclusive distributor for one variety of product, or should he be a selective distributor, or he can be an intensive distribution? Every product, everything he sells. As levers, Unilevers, once upon a time, used to have 3 different categories of products and distributors for each category was different. Something like personal care, if he had to sell his personal care products, Vaseline, etc., he had a different distributor. For his food product, he has a different distributor. For his hygiene and home care products, he had a different distributor.
ठीक है. Today they have merged all of them. So think about all the number of products, possibly 600 plus products and SKUs, or even more. भगवान जाने कितना है उसके पास. And he has to keep all the distributor has to keep all the varieties because every kirana sells all products of levers. But possibly for a Bajaj KTM imported bike distributor, he will only keep KTM imported bike के 5 मॉडल, बस हो गया काम. Correct. So that's the product variety. According to that, I will decide my distributors, my intermediaries, who can handle so much variety. And finally, for certain set of products like appliances, for automobile, etc., service backup is very important. So I will only have such distributors or such, intermediaries, dealers who have service backup. You cannot think of an automobile dealer without a service center. You cannot think of a two-wheeler dealer without a service center. You cannot think about a home appliances, dealer like refrigerator, washing machine, dishwasher without a service backup. You cannot even think about, appliances like vacuum cleaner or water filter, uska service backup nahi hai distributor ke paas. Okay. So we also need to think about that when we design a channel. Correct? Any questions? Understood? Can you match your company's offerings with these? आपको अभी लग रहा है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कैसा होना चाहिए? ठीक है? Yes, sir. Yeah. Channel design decisions. So identifying major channel alternatives. First of all, type of intermediaries, number of intermediaries, and terms and responsibilities of channel members. So when I decide on a channel, when I decide on my, आप जो अभी बता रहे थे, sir, what will be the length of the distribution channel? So length of the distribution channel also depends on what type of distribution channel I'm going to create. Okay. For a FMCG kind of a distribution channel, the whole distribution channel doesn't need so much of, technology, complexity. Nahin. But for an electronic distribution channel, if you're selling TVs and home theaters and so on and so forth, the distribution channel needs a lot of technological support. They need people support, technically knowledgeable people support, and so on and so forth. So the type of distributors, type of intermediaries are decided on depending on the industry. For a textile industry, the intermediaries are different kinds of intermediaries. Okay. They're mostly wholesalers. For pharmaceutical industry, the intermediaries, distributors are mostly wholesalers. They are not regular kind of distributors कि मेरा हर दिन गाड़ी निकलेगा माल service करके आएगा. FMCG distributor has that weekly coverage of the market, fortnightly coverage of the market, ठीक है, delivery system, etc. एक pharmaceutical company का क्या होता है? आप किसी मेडिकल शॉप में शाम को जाके खड़े हो जाना, देखना लड़के आते हैं, ठीक है, वो मेडिकल शॉप के सामने एक कॉपी बुक रहता है, वहां पर लिखा रहता है कौन कौन सा दवाई खत्म हो गया, वो देखता है, वो लिखता है, वो सेल्समैन आके लिख लेता है कौन कौन सा दवाई खत्म हो गया, नेक्स्ट डे आके उसको बेच के आता है. बट फॉर FMCG डिस्ट्रीब्यूटर उसका रेगुलर बीट प्लान होता है, इतने दुकान कवर करोगे, इस मार्केट में जाओगे, नेक्स्ट डे उसी बीट प्लान के ऑर्डर लेके उसको डिलीवर करोगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फॉर अ B2B डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर टेकिंग का कोई बात ही नहीं है. वहां पर रिटेलर खुद आते हैं, भैया मुझे ये चाहिए, ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर पहुंचा दिया जाता है. If it's a wholesaler, then there is nothing. Company just straight away goes and dump stock straight away. He has distributors who goes and dump stocks to these wholesalers and come back. So type of intermediary, अगर Amazon जैसे लोगों को बेचना है, is a big, or suppose think about Reliance supermarket, Smart Bazaar supermarket को बेचना है. Company doesn't need to have a distributor in between. Company straight away from their depot or warehouse will go and supply to those supermarkets in their central warehouse. So the types of intermediaries are decided on basis of the industries and the requirement of the market. What will be the length of the chain? Correct? Length of that value chain. बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होगा कि नहीं होगा, रिटेलर होगा कि नहीं होगा, एजेंट होगा कि नहीं होगा. That number of intermediaries. मैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर चाहूंगा, कितने डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे उस एरिया में,
या स्ट्रेट अवे रिटेलर के पास जाऊंगा, या बीच में एक एजेंट रहेगा, ब्रोकर रहेगा, 3 स्टेप होगा या 2 स्टेप होगा, द काइंड ऑफ, ये जो लेवल्स, कितने लेवल्स होंगे, this will decide on the number of intermediaries and the geography. How one distributor, the area, that the span of control, कितना area वो cover कर सकता है, how close can he go to the customers. Correct. And customer always doesn't mean consumers like you and me. Customers also mean, industrial customers, B2B customers. ठीक है. Offices and organizations are also customers. ठीक है. So depending on the number of customers, depending on the geographical stretch of the area, my number of intermediaries are decided. ठीक है. Terms of responsibilities of channel members. So every channel member has to have a MOU or an agreement with the organization and has to abide by the terms and regulations and responsibilities of the manufacturer. There are legal agreements which are done with every distributor, because you are transacting big amount with them. You are supplying them large quantity of products, large value of products, and they have to pay you money. They have to abide by pricing. They have to abide by market coverage norms, and so on and so forth. तो सारा कुछ का terms and responsibilities होता है. ठीक है? Okay. Any questions? Okay. So identifying major channel alternatives, number of intermediaries, exclusive distribution, selective distribution, intensive distribution. So this is something I also told you possibly in the beginning. Absolutely, जब आप लोग start किए थे ये course, exclusive distribution is, the whole geography I give one distributor. He's exclusive distributor for a particular geography. For one full Maharashtra area, I give one distributor. For one full Mumbai distributor, I give one full exclusive distributor. There is no other distribution. He doesn't have, no other distributor can come and sell products in this area. That's called exclusive. So to give you an example, Apple, let me come back to Apple again. Apple has 2 distributors in the whole country, one servicing the north and the west, the other servicing the south and the east. Okay. So these 2 distributors are the only people so they are exclusive for the geographies that's given to them. Okay. One distributor for whole Mumbai city for any particular product. Even think about franchisees. Okay. So franchisees are the ways to, another way distributor जैसा ही होता है जो आपका कंपनी का प्रोडक्ट जाके मार्केट, जैसे कि मैकडोनल्ड्स के जितने भी स्टोर हैं, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, वेयर, they are all franchisee stores. And the master franchisee, who is the main franchisee in the country for Pizza Hut, for McDonald's, for Domino's, for Burger King, they are appointed by the main company sitting in US. Okay. Now, McDonald's का भी वैसा ही है. The master franchisee, there are only 2 master franchisees, one in the north, one in the south. The guy in the south services south and east, the guy in the north services north and west. I forgot their name, but they are exclusive franchises. Jubilant, sir. Hello. Jubilant. Jubilant तो एक है, one of them. Jubilant is one of them for Domino's. ठीक है, but and there's another one, I'm talking about McDonald's का, जिसको लेकर बहुत बड़ा केस हो गया था नॉर्थ एंड वेस्ट लेके, जहां पर मैकडोनल्ड्स के स्टोर बंद हो रहे थे. I forgot his name. ठीक है. Okay. Jubilant is one for Domino's. ठीक है. So something like that. Selective distribution is absolutely selective product distribution. So something like, if I say that Samsung has dealers for their electronic home appliances like TVs and home theaters. Okay. They will not sell mobile phones. So very, very selective. They are only TV and home theater sellers, not mobile sellers. And for the Samsung mobile, there is absolutely a different set of dealers and distributors. For KTM bikes, Bajaj, which is a Bajaj product today, KTM bikes are
the KTM bike distributors only sell KTM bikes for Bajaj. They don't sell the other products of Bajaj like Pulsar or the scooters or the three-wheelers. They do not sell. So very, very selective distribution rights. Okay. Selective product range to be distributed. Okay. So something like even in consumer products, even in food products, consumer products, there are selective distributors. So something like Nestle has selective distribution for food service products. Food service products are products which goes to hotels, restaurants, caterers, QSRs, and so on. तो उनको बल्क प्रोडक्ट चाहिए होता है, बड़े बड़े पैकेट्स ऑफ मैगी, बड़े पैकेट्स ऑफ कॉफी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो उसके लिए अलग डिस्ट्रीब्यूटर होता है. Nestle has vending machine distributors who are absolutely selective. They don't sell any other Nestle products. They only go sell vending machines and the vending machine का जो कॉफी होता है बस. ठीक है. So absolutely selective distribution. Okay. And finally, it is intensive distribution. Okay, every distributor sells everything, and across the country there are distributors. Not very geographically, of course, every distributor has been given a geography, but there is no exclusivity, there is no selectivity. Okay, he goes, their width of distribution, depth of distribution, number of products distribution, everything is intensive. Okay. Okay. Any questions till now? No. So let's take a 5 minutes break or 10 minutes break and come back. Today we'll end at 8:30. Okay. And sir, you were just about to give us. I will give you a case study today. Yeah. Okay. Chalo. Yep.
Sir, are you there? Okay, we are back. I've sent you the case study on WhatsApp. एक बार खोलिए उसको, देखिए. You can understand it. It's a simple one. ठीक है, देखा आप लोगों ने? केस स्टडी पढ़ा? छोटा सा है, इंटरेस्टिंग है. इट शुड बी नॉट बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. ठीक है. आई वांट यू टू यूज वॉट एवर यू हैव लर्नड इन द लास्ट. आज हम लोग का फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट खत्म हो जाना चाहिए. ठीक है. एंड सो यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस देयर. ठीक है. एंड नेक्स्ट tomorrow possibly we'll start the some other chapters. Let me see what I will start tomorrow. ठीक है. पढ़ लिया? पढ़ रहा हूँ सर. ओके. So, कल हम लोग एक काम करेंगे. कल हम लोग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे. उसके बाद स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे. उसके बाद इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन करेंगे, करके फिनिश करेंगे. ठीक है. और नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ भी होगा राइट? हाँ, नेक्स्ट मंथ सर कंप्लीट भी हो रहा होगा 6 मंथ राइट? 6 मंथ्स तो कंप्लीट होगा नहीं आपका. कैसे 6 मंथ कंप्लीट होगा? आप लोग जनवरी से स्टार्ट किए हो ना? नहीं सर, सॉरी, जनवरी नहीं, सॉरी, आप लोग जुलाई से स्टार्ट किए हो ना? मई से स्टार्ट किया आई थिंक सर. एक सेकंड में देख के बताता हूँ. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. मई से स्टार्ट किए हो, देख लो एक बार. अच्छा नहीं, जुलाई से मेरे साथ स्टार्ट किए. करेक्ट. जुलाई 19 को मेरे साथ स्टार्ट किया. मई 15 से स्टार्ट हुआ सर. करेक्ट. नहीं, फिर 6 मंथ्स अक्टूबर एंड तक मेरे ख्याल से आई विल स्टार्ट, बिकॉज बीच में मैं 2 क्लासेस किया नहीं हूँ. सो शायद अक्टूबर का लास्ट वीक, दशहरा वाला जो वीक है ना, उस वीक में मेरा फिनिश होगा. ओके. ठीक है. सो मेन का तो आज ही, मेन जो टाइम लगने वाला था वो आज फिनिश हो जाएगा. बाकी जो सारे हैं ना वो इट विल गो फास्ट. डोंट वरी. ठीक है. इनफैक्ट लास्ट वीक तो मैं आप लोगों को और एक केस स्टडी दूंगा. ठीक है.
which will be important. Last week मैंने जब खत्म होगी, I'll give you another case study जो आप लोग prepare करोगे. Take 15 days time or 20 days time, prepare it well. It will be a bigger case study. ये तो एक पंच का case study है, वो वाला actual case study रहेगा, business case study. ठीक है, तो उसको करके आप लोग submit करोगे, and then we will have a exam में एक छोटा सा, then you'll complete it. So by your exam will be end November, not before that. November. Okay. So it will be subjective or objective, sir? Usually I give objective. I'll check with ये क्या नाम है, नीरज की पैटर्न को चेंज किया कि उन्होंने, अगर नहीं तो usually I give an objective question. Yes. And sir, what will you suggest, sir, after this course? And what should like? आप तो ऑलरेडी IIMT गाजियाबाद का टोटल ये कर रहे हो, MBA कर ही रहे हो. That will also be completed till January. तो बस you are done. और क्या करना है आपको? अब वो भी तो मार्केटिंग में ही कर रहे हो. Right, sir. तो बस और क्या, और कुछ जरूरी नहीं है आपको. So growth नहीं हो रही है. नहीं ग्रोथ, देखो ग्रोथ नहीं हो रही है, वो तो अलग बात है. वो आप तो पूरा MBA अहमदाबाद से भी कर लोगे तो ग्रोथ नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, आपको जितना सीखना था अब ये दोनों कोर्स मिला के सारे सीख जाओगे. ठीक है, नाउ हाउ यू अप्लाई दैट इन द इंडस्ट्री, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है सर, आई वाज प्लानिंग फॉर CMO प्रोग्राम फ्रॉम IIM लखनऊ. अभी नहीं, एक साल का गैप के बाद. नॉट वर्थ इट. नॉट वर्थ इट. आप IIMT गाजियाबाद फुल कोर्स एक कर रहे हो, मेरे वाला कर रहे हो, आई थिंक गुड इनफ. आपको नॉलेज CMO कोर्स में अलग से कुछ नहीं देगा वो लोग. ठीक है. And what about, sir, if I think you like if I do digital marketing separately, digital marketing and data analytics? जरूरत नहीं. डेटा एनालिटिक्स इज समथिंग. आप देखो, इट्स योर चॉइस कि आप किस लाइन पे जाना चाहते हो. यू आर ऑलरेडी इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग लाइन, यू आर नॉट इनटू एनालिटिक्स. एनालिटिक्स इज अ डिफरेंट डोमेन. ठीक है, जहां पर हो उसी को स्पेशलाइज करके आगे बढ़ो ना. उसी को यूज करके आपका नॉलेज वाइज देखो. There are two things that an industry needs. One is knowledge, one is skill. And the third one which they need is behavior. So आपका knowledge तो ये दोनों कोर्स कर रहे हो, good enough. ठीक है, skills, what you are doing in your day-to-day life, that is giving you skills. That is giving you experience. And from there you are developing your behaviors for being a better manager, better leader. So apply those knowledges and skills properly. Learn more from the industry. कोर्स करके इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है. CMO कोर्स भी घूम फिरा के आपको जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाएंगे. ठीक है, एनालिटिक्स की बात है, आप एनालिटिक्स करके कर सकते हो टू सम एक्सटेंट. ठीक है, एक एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हो, जाके कोर्सेरा में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट जानकारी के लिए कि एनालिटिक्स होती क्या है. Okay. But that is not going to give you career. Analytics is good to know. Digital marketing is good to know. ठीक है, जो फंडामेंटल्स है आप दोनों कोर्स करके, इवन डिजिटल मार्केटिंग आपको IIMT में सिखाया जाएगा कुछ ना कुछ. तो अभी सिखाया जाएगा सर, नेक्स्ट सिखाया जाएगा. राइट. सो आई डोंट थिंक यू नीड एनी मोर. कोई जरूरत नहीं. सेल्स एंड मार्केटिंग में रहोगे तो इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, जब तक आप स्ट्रीम नहीं चेंज कर ले. तो हाँ, मैं मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग में जा रहा हूँ, मैं मार्केट रिसर्च में जा रहा हूँ, तो फिर जाके आपको दूसरा कोर्स करने की जरूरत है, क्योंकि आपको नॉलेज गेन करने की जरूरत है. Actually, sir, I'm struggling ये हो रहा है कि सर, because I'm not getting a good company, like good brand जो बोलते हैं, because एक large company. नहीं, अभी का जो ब्रांड है काफी अच्छा ब्रांड है आपका. Goodyear is a good brand. ठीक है. Right, Goodyear is a good brand, but like वो Assurance Intel Limited is the company, like get the license to manufacture the product of Goodyear. Correct, but they are finally manufacturing Goodyear as giving you Goodyear as a brand. ना, that's important. Team size is very less than 200 के लोग. कोई जरूरत नहीं. So देखो, आप अपना करियर शुरुआत कहाँ से किया? मैंने सर एजेंसी से किया था. राइट, एजेंसी से किया था. राइट. कितने साल पहले किए थे? In 2011 सर. 2011. आज कितना है? 12 साल ही हुए ना. एजेंसी में भी तो 3-4 साल काम किए हो. 8 साल 9 साल काम किया. 9 साल एजेंसी में काम किए हो. एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल काम किए हो. राइट सर. तो आपका तजुर्बा हुआ ही कहाँ पर है? ऑर्गेनाइजेशन का 3 ही साल तो हुआ है. ओके. प्रिंसिपल कंपनी का जो एक्सपीरियंस आपको तो 3 ही साल हुआ है. गिव योरसेल्फ टाइम टू ग्रो ना. Spend some good time in one organization. ऐसा नहीं कि हॉप स्टेप एंड जंप कि मैं 1 साल के बाद और कहीं चले जाऊं. नहीं, it will not give you career.
Stay in an organization, take 2 promotions here, and then be ready for the next. Okay. Do your best in every organization. यार अगर सौरभ चौधरी 26 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में रह सकता है तो ऐसा थोड़ी रह गया था. Next company was 8 years. ऐसा थोड़ी रह गया था. Because I wanted to become the head of something. I became the director because I was 8 years in that organization. उसके लिए टाइम देना पड़ता है बाबा. ठीक है. करियर आएगा, करियर सबको आएगा. ओनली थिंग धीरज कितना है, दैट इज ऑल्सो पॉइंट. आज के जमाने में तो 1 साल 1.5 साल 20,000 की सैलरी बढ़ी, मैं भाग गया. ये नहीं देखा कि भैया जिस कंपनी में जा रहे हो वो मेरे को वो 20,000 के अलावा और क्या दे रहा है. इन्फ्लेशन भी सब बहुत हाई है सर इस समय. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बी देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बी स्टडी इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन. गुडियर इज अ गुड ब्रांड, पैनासोनिक इज अ गुड ब्रांड. बी स्टडी देयर. हाँ, जो सीखे नहीं हो उसको सीख लो. दैट्स व्हाई यू आर डूइंग कोर्सेज. आज मेक अगर है तो मैं बोलता हूँ आगे जाके मेक को एक ठीक है चलो गुड अच्छा ऑनलाइन एमबीए को प्रोग्राम भी होगा तो कर लो. फुल स्ट्रक्चर्ड एमबीए प्रोग्राम. ये बहुत सारे आते हैं. ठीक है, थोड़ा पैसा खर्चा हुआ कर लो, बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच इज गोइंग टू डेवलप यू ऑन योर होल नॉलेज एज अ मैनेजर, एज अ बिजनेस मैनेजर. दैट इज इम्पोर्टेंट. सर आमटी गाजियाबाद भी कराता है 2 ईयर का पीजीडीएम. नहीं, बहुत सारी जगह है, बहुत सारे. ऐसा नहीं है आईएमटी गाजियाबाद, बहुत सारे है. वो तो आईएमडी कराता है. ठीक है, जाके कर लो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो. थोड़ा पैसा खर्चा होगा, गुड. लाइफ के लिए एक बार हो जाएगा. एक अपना सीवी में तो लग जाएगा, आई एम एमबीए फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट. फिर बाकी देखा जाएगा क्या होता है. ठीक है. सो आई थिंक दैट्स मच इज इंपॉर्टेंट. उससे ज्यादा नहीं. अगर एक फुल टाइम एमबीए कर ली उसके ज्यादा कोई कुछ नहीं बढ़ाता है. अंदर दैट आप स्ट्रीम, आप डेटा साइंस पढ़ रहे हो, आप मार्केटिंग एनालिटिक्स पढ़ रहे हो, आप बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ रहे हो. ठीक है, आप एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया का कुछ पढ़ रहे हो, आप मार्केटिंग रिसर्च का कुछ पढ़ रहे हो. वो बिल्कुल स्ट्रीम ही अलग हो गया. फिर आप किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं. बट सेल्स एंड मार्केटिंग के लाइन पे रह के ब्रांड मैनेजमेंट करना है वगैरह, तो ये जो पढ़ रहे हो गुड इनफ. इनफैक्ट इवन एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया इज गुड इनफ विद दिस स्टडी. Okay. Only thing is that you choose your industry well, be there for some time, and then grow there. That's important. Okay. इसीलिए मैं सबको बोलते रहता हूँ कि भाई इंडस्ट्री चूज जब करोगे बड़े ध्यान से करो कि मुझे इंडस्ट्री पसंद है इसीलिए जा रहा हूँ. ये एक चैलेंज रहा है सर मेरे साथ. बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. मैंने जस्ट टू गेट अ जॉब यू डोंट इवन स्पेंड टाइम टू थिंक अबाउट दैट इंडस्ट्री. मैं जाना चाहता हूँ कि नहीं. ठीक है, और कभी कभी गलत इंडस्ट्री में पहुंच जाते हो, देन यू स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड देन यू डोंट नो व्हाट टू डू. ठीक है, एंड देन कमिंग बैक इज अगेन अ डिफिकल्ट पार्ट. ठीक है ना. चलो, ओके, श्योर. आई थिंक वी आर ऑलरेडी एट 8:30 टुडे. चलो, नो वरीज. थोड़ा सा सर केस स्टडीज साथ में मिलकर करना है मेक के या इंडिविजुअल मिलके करोगे ना. केस स्टडीज ऑलवेज कोशिश करो. केस स्टडीज जहां भी जिंदगी में केस स्टडी मिलेगी ना, ट्राई एंड डू इट इन अ ग्रुप. ठीक है, व्हाई? बिकॉज केस स्टडीज आर एक्चुअल फैक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई अकेले काम नहीं करता है. इट्स अ टीम वर्क देयर. ठीक है, एंड केस स्टडीज आर यूजुअली प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, पेन पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. जब ये छोटा कोक लॉन्च किया था, इट वाज अ चैलेंज फॉर देम. हाउ डिड दे ओवरकम द चैलेंज? व्हाट आर द थिंग्स दे थॉट? ये पूरा टीम, मार्केटिंग टीम जो था बैठ के किया था. तो एक बंदा एक चीज सोच सकता है, 2 चीज सोच सकता है, 3 चीज सोच सकता है, उससे ज्यादा नहीं. बट आप लोग तीनों बैठोगे तो शायद 10 चीज सोच सकते हो. एंड देन यू कैन ब्रिंग इनटू द टेबल. हाँ बॉस, ये ठीक है, ये नहीं है, ये करना है, ये करना है, ये ऐड करो, वो नहीं करो. And then all your ideas can come into it. It always becomes a very fruitful discussion, debate, argument about a solution, and then you decide which is the best. ठीक है, leaders choose what not to do बोलते हैं, पता है? ये हम लोग सोचते हैं कि leaders choose what to do. नहीं, लीडर्स के सामने 10 ऑप्शंस आते हैं तो 9 को एलिमिनेट करना पड़ता है, तब जाके जो बेस्ट है वो पड़ा रहता है. So leaders choose not what not to do. That's where the critical thinking and analytical thinking works. And that's why we say that case studies always need to be done in groups. And they, first of all, very importantly, case studies, when you do case study, there's no right and there's no wrong. Okay, there are different ways to think, and those are what case studies are done for. Case studies make you ready for the industry, to make your knowledge, you apply your knowledge to the industry.
Okay, it's an application of your knowledge in the industry. So that's what case study prepares you for. आज अगर मैं बस चलता तो अगर टाइम होता तो मैं आपको हर दिन एक केस स्टडी, जब मैं IIM में पढ़ रहा था IIM अहमदाबाद में 365 दिन में कुछ नहीं होगा तो 250 केस स्टडी हम लोगों ने किया था। और ऐसा नहीं एक पेज वाला, 25-25, 30-30, 40-40 पेज वाला केस स्टडी रात सुबह के सर देके चले जाते थे। वैसे 3 क्लासेस हो तो 3 सर 3 केस स्टडी देके गए और बोलते थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग आके प्रेजेंटेशन करो। हम लोग रात को 3-3, 4-4 बजे तक क्लासरूम में बैठ के प्रिपेयर करते थे, टीम में करके नेक्स्ट डे प्रेजेंट करते थे। ठीक है, एंड दैट वे मेड अस अवेयर ऑफ व्हाट हैपेंस इन दिस इंडस्ट्री। डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ द इंडस्ट्री के थ्रू से हम लोग गुजर गए थे। ठीक है, सो दैट्स व्हाट अ गुड एमबीए स्टडी डज। एंड मैं अभी जहां भी पढ़ाता हूँ, माय स्पेशलाइजेशन इज केस स्टडी। मैं केस स्टडी बेस्ड पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को सिखाता हूँ केस स्टडी कैसे करना है, केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स में कैसे जाना है, हाउ टू अप्रोच केस स्टडी। तो मेरे को सारे इंस्टीट्यूट्स में मेरे प्रोफेसर जानते हैं कि केस स्टडी होगा तो सौरभ चौधरी के पास भेज दो, सिखा देगा कैसे करना होता है। ठीक है, सो करो, आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग। द मोर केस स्टडीज यू डू, बुक से भी ज्यादा केस स्टडीज जितना करोगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि केस स्टडी में बहुत कुछ होंगे जो आपकी जानकारी, जैसे मैंने यहाँ पर अभी चेंज किया, एक्चुअली मैं बैठ के इसीलिए 5-2 मिनट देर हो गई कि मैंने दिया था 4 A's को कैसे करोगे देखा हो, तो मुझे मालूम था आप लोग जानोगे नहीं व्हाट इज 4 A's, तो मैंने उस पर एक्चुअली लिख के दिया 4 A's क्या है। अदरवाइज नॉर्मल केस में 4 A's था नहीं। तो आपको क्या करना होता है, यू हैव टू गो टू गूगल और अ बुक एंड फाइंड आउट व्हाट आर द 4 A's एंड देन थिंक अबाउट इट। ठीक है, सो केस स्टडी वैसे ही होता है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं जो आपको मालूम नहीं होंगे, बहुत सारी चीज आपको होते हैं जो मालूम नहीं होंगे। केस स्टडी विल नॉट ओनली हैव मार्केटिंग एंड सेल्स, इट विल आल्सो हैव सम फाइनेंस एंगल, सम HR एंगल, आपको मालूम नहीं होगा तो आपको सीखना पड़ेगा दूसरी जगह में जाके, बुक्स खोल के, लाइब्रेरी में जाके, गूगल में जाके सीख के फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ यू लर्न फ्रॉम केस स्टडीज। ठीक है, सो केस स्टडीज आर एप्लीकेशंस ऑफ योर नॉलेज इन द for knowledge in the industry, and so they are application based, so that's important to learn because then you will be better utilizing your knowledge and skills in the industry. Okay, so that is the way case study needs to be handled. Okay, so quickly देखता हूँ और कुछ। Okay, so टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चैनल मेंबर्स। तो चैनल मेंबर्स के पास 4 चीज कंपलसरी हो जाते हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशंस हैज टू द चैनल्स हैव टू मेंटेन अ प्राइस पॉलिसी व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन टेल्स देम। Okay, so they cannot take more margin, they cannot sell at a lesser price than the prescribed price of the company, they cannot sell at a more price than the prescribed price of the company, and so on and so forth. So these comes under their responsibility. There are terms and conditions. Conditions of sale, the company decides with them how many vehicles, how many salespeople, what is the price margin, what is the credit policy, etc., etc. So these conditions of sales are also as a part of the terms and conditions. Distributor territorial right, geographical right, that a distributor is given a particular geography to work for. So a distributor in South Mumbai possibly cannot come to Andheri and sell his products. So these are all terms and conditions given in that for the distributors, the channel members. Mutual service and responsibilities. There are certain mutual service and responsibilities of channel members, something like, they will pass all the information from the market to the organization. They will give the list of customers that the organization is servicing to the organization. They'll pass all the competitors' information to the organization, and so on and so forth. And at the same time, organization will pass all information and give all services to the distributors. And there were plenty of services like training services, then accounting services, new technology services, these kind of services companies, organizations provided to the distributor. These are all mutually agreed, put it on the MOUs, memorandum of understanding, or the agreements of the distributor, and then they go ahead. Okay. When we decide on channels, these are a couple of things that organizations actually do when they're selecting channels. The first is selecting the channel members, the right channel members. So what should be there? Who should be decided as a good channel? Okay. And for that, I'll just come to it possibly
just remind कर देना एक बार कहीं पर लिख के रखो. Tomorrow I will show you two things. One is selection criterions for a distributor. Okay, and second thing is I told you about FMCG distribution. There are 14 different channels of distribution. I will share with you tomorrow. Okay. Once you have selected the distributor, training of the distributor or the channel partner is very important because they need to be trained with your products, your ways of distribution, your company's policies and everything. Okay. Then every quarter, just like you evaluate or appraise your employees, you appraise or evaluate your distributors also. They are also given certain KPIs. Now, uska bhi target diya jata hai, uska bhi distribution, number of customers, new customers, etc., etc. जो भी है, return on investment is a KPI for them. So evaluate them on all the parameters and tell them that where do they need to improve and also support them. How will they improve them? Okay, that evaluation of distributor is a very, very important part for good organizations. Okay, because distributors are a part of the organization. So you need to develop them also. You need to also tell them that this is something good about you. This is not something so good about you. So whatever is not so good about him, whatever are his areas of improvement, you need to help them develop that. You need to make them aware that this is something which you need to develop and work more. This is how you improve your return on investment and so on and so on. Correct. Then modifying channel decisions. Okay. So suppose today, एक जमाना था, possibly 10 years back, when an FMCG market would always be a distributor retailer market. You will have a distributor and then he will sell it to the retailer, it will be sold to the consumer. Now, today with the evolution of the digital space, there are a lot of changes. Modern trade has come in. Okay, supermarket chains have come in. There are e-commerce chains have come in. And there is a change in design of the market. Wholesalers are becoming very strong. Some places wholesalers are becoming very weak because companies' distribution has gone deep and wide. So these are in these modified channel structures, your design needs to also evolve and change. ठीक है, आपको भी चेंज करना पड़ेगा. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई 10 साल पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से काम करता था तो आज मैं रिटेल पे I will only go through distributor. I will not go through Amazon. I will not go through e-commerce. I will not go through modern trade. So this decision, this modifying change according to the market, according to the need of the market and the customers is important. And then when you want to modify the market channels, there is a decision-making process, the sales department, the marketing department, the finance department, everybody together decides on that. It's not only, and in fact, sales department is very, very much involved to understand what is the modification required. They are there to set up the policies for how the modification is to be done. Okay. And finally, when you are done with the country domestic market and you want to go out into the other countries, globally, you want to cross the borders and start selling a product, then there are global channels, a different kind of channel. There are large organizations who act as distributors, master distributors of areas or countries. Okay, they are as good as companies. They have their own finance department, they have their own marketing department, communication department, advertising department, everything, just as an organization. And they are they get products from principal companies like Nestle, Levers, P&G, all, and they are the sole distributors across the country. Mostly in countries like Africa, mostly in countries like UAE countries. ऐसे ही होता है. बड़े organizations, Levers has a master distributor there. Okay, who has, or Master Superstock is there, who has made his own distribution setup. They have their, promotion and marketing department. They have their, people who make their advertisement, selling, distribution, everything के लिए pricing, सब कुछ एक organization जैसा होता है. These companies do it. छोटे distributor उसके अंडर में होता है. ठीक है. So that global channel consideration is something. International business जब आप लोग पढ़ेंगे कभी, उस टाइम में आप लोग जानेंगे. ठीक है. And एक काम होता है. We'll leave it here today. Tomorrow we'll quickly finish this. There are just a few slides left. Okay. And then we will take it to your just, I think just 10, 12 slides left. So we'll finish this and then we'll go to the next chapter. What time, sir, tomorrow? Okay. Tomorrow we'll do it same time, 7 o'clock in the evening. Okay. Not possible. Or do you want to come in the morning? Morning will be fine, sir. देख लो आप लोग, Meg, you are okay with the morning? Yes, sir, I'm okay, sir.
तो फिर ठीक है, 11 बजे स्टार्ट करते हैं, 1 बजे खत्म करते हैं। And sir, actually, so you were saying two things we need to हाँ, examine. One was एक है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, Distribution channel. ठीक है, एंड द सेकंड वन इज you have to remind me about this one. 40 type of distribution channels type. हाँ, वो एक है 14 distribution. Just a second. अभी बोला था. हाँ, another thing is what are the qualities required for a distributor? ठीक है. How do you decide on who is a good distributor, who is not a good distributor? So what is the process of that? ठीक है. So these two things tomorrow I'll start and then go to the rest of the 15 slides and then possibly we'll go to the next. ठीक है. Okay. चलो. Good night. और केस स्टडी के लिए ना, एक आप लोग क्या करोगे ना, दिन में ऑफिस से आने के बाद भी all three of you maybe take a time, half an hour time हर दिन ले लो, एक एक क्वेश्चन को हैंडल करो. ठीक है. बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक आप लोग सारे क्वेश्चन को एक पीपीटी में डाल दो, ज्यादा नहीं, 4-5 स्लाइड. ठीक है. जो भी आपके थॉट प्रोसेस है उसमें डालो एंड इट इज डन एंड देन विल डिस्कस. ठीक है ना. ओके.